अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान शबीर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं ZS Motovlogs एंड आई वेलकम यू टू द 46th डकार जीप रैली एंड द 5th कंसेक्यूटिव डकार जीप रैली इन सऊदी अरेबिया। इससे पहले कि हम अपने डकार जीप रैली के एडवेंचर स्टार्ट करें और आपको डकार जीप रैली दिखाएं, अ वर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दुनिया के सबसे बेस्ट हाइपर बाइक्स और सुपर बाइक्स मौजूद हैं, मगर एक प्रॉब्लम जो हमें हमेशा फेस करना पड़ता था वो ये था कि हमें इन बाइक्स के जो रिकमेंडेड लुब्रिकेंट्स हैं वो हमें नहीं मिलते थे पाकिस्तान में। तो उसमें होता ये था कि हमें ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी और हमें ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं पड़ती थी। मगर अब पिछले 1 साल से मोटूल पाकिस्तान में आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि मोटूल इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, डेवलपर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर इंजन, स्पेशली मोटर कार्स एंड मोटर बाइक्स। तो मैं भी अपने तमाम मोटर बाइक्स के अंदर और कार्स के अंदर अब मोटूल की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, इनके लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम सनी चौधरी एंड आई एम द ऑनर ऑफ टॉक मोटर स्पोर्ट्स। मैं आज बड़ी खुशी से आपको एक न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि मोट्यूल पाकिस्तान में ऑफिशियली आ चुका है। मैं मोट्यूल का बहुत पुराना यूज़र हूँ और मेरे कुछ जो क्लोज सर्कल में हैं वो भी बड़े अरसे से मोट्यूल यूज़ कर रहे हैं और आज से पहले हम मोट्यूल को इम्पोर्ट करके देते थे जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं था, थोड़ा महंगा भी पड़ता था, लेकिन क्योंकि बाइक का रिस्पांस इतना ज़बरदस्त हो गया था कि मैं और जो मेरे दोस्त हैं वो मोट्यूल के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अब क्योंकि ऑफिशियली मोट्यूल पाकिस्तान में आ चुका है तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, तो आई एम रियली हैप्पी और आपको टॉक से ये मिलेगा और मैं एक लाजमी आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा आप लाजमी अपने बाइक में यूज़ करें, उसके बाद आप स्विच नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ ईशान आलम है और मैं मोटुल पाकिस्तान में एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। मोटुल को पाकिस्तान में आए हुए 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और इस ब्रांड को पाकिस्तान में लाने का मकसद एक तो ये था कि जो लोकल मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री है उसको एक अच्छा और इंटरनेशनल ऑयल, इंजन ऑयल जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और बिसाइड्स दिस वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि हमारा जो लोकल मोटर स्पोर्ट्स है हम लोग उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज करवा सकें। मोटल इज हेयर टू स्टे एंड आवर एम इज टू प्रमोट पाकिस्तान लोकल मोटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल एंड इंटरनेशनली भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जो लोकल मोटर स्पोर्ट्स है, बिकॉज पाकिस्तान में लोकल टैलेंट बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड दिस टाइम हम लोग फ्यूचर में भी इस किस्म की एक्टिविटीज को प्रमोट और स्पॉन्सर करते रहेंगे। Motul is a global giant of lubricants with an international presence at WRC, Le Mans, MotoGP and Dakar as well. It's been 170 years and this year Motul has entered Pakistani market and they are here to stay. Now let's go back to Dakar. Welcome back. Dakar Jeep Rally is not a normal rally. It's a rally that consists of 5,000 kilometers of rough and brutal terrain. अभी इस टाइम सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ हाइल में। वाओ, अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ हाइल के अंदर और यहाँ पे अभी कार्स और मोटर बाइक्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
सबसे पहले मोटर बाइक्स आते हैं, उसके बाद कार्स आती हैं, फिर एटीवीज़ और उसके बाद ट्रक्स। सबसे पहले मोटर बाइक्स इसलिए आते हैं क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है कार्स और ट्रक्स के आने की वजह से, तो मोटर बाइक्स पहले क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद एटीवीज़, कार्स और एंड में ट्रक्स आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ हम अच्छे शॉट्स ले सकें, आपको अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें और आप अच्छे से ये व्लॉग को एंजॉय करें और डकार रैली को समझ सकें। ये वो जगह है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और अब यहाँ पे रुक के हम कुछ कार्स और मोटर बाइक्स के शॉट्स लेंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर का मैंने सफ़र किया है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे माउंटेन्स नज़र आ रही होंगी, इनकी बैक साइड से मैं आया हूँ यहाँ तक सिर्फ आपके लिए अच्छी शॉट्स और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, तो आज का हम अपना सारा दिन डेजर्ट में स्पेंड करने के बाद अब बीवैक पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है मगर प्रॉपरली अरेंज्ड है। आप ये चेक करें कि हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग कैंप्स बनाए हुए हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कंपेटिटर सर्विस, ऑफिशियल्स और वहाँ आगे मेडिकल के कैंप्स हैं। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड ये जगह है। मैं इस टाइम जा रहा हूँ मोटुल के कैंप की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स मुझे अपने सामने नज़र आ रहे हैं और उनकी ट्यूनिंग हो रही है, सर्विस हो रही है, जो उनके काम वगैरह हैं वो हो रहे हैं, मगर राइडर्स अपने काम खुद करेंगे। कोई उनके पास टीम या कोई उनके पास मैकेनिक्स नहीं है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये जो अब आपको सामने कैंपिंग एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा कैन-एम का है और यहाँ पे इनकी बगीज़ होंगी क्योंकि कैन-एम की बगीज़ आपको पता है बहुत मशहूर हैं। ये इनका पूरा सेटअप होता है यहाँ पे, इनके टायर्स, इनके इंजन, एवरीथिंग। बाइकर्स जो हैं वो बेचारे अकेले होते हैं, मगर ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनके साथ पूरी इनकी टीम्स होती हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी कार इनने ओपन की हुई है अपनी, उसका काम हो रहा है, शॉक्स चेंज हो रहे हैं, टायर्स। ब्यूटीफुल। अगेन एक्रापोविक का एग्जॉस्ट नहीं है, एक्रापोविक नहीं है, कुछ और है। आफ्टर मार्केट ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट। ये एक ट्रक है मेरे सामने, इसका सेटअप देखें।
ये जी मोटुल का केटरिंग एरिया है। वहाँ अंदर आप जाएंगे तो पूरा बुफे है। यहाँ सामने अभी थोड़ी देर में बोनफायर स्टार्ट हो जाएगा और इस तरफ आप आएँ तो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, थोड़े से स्नैक्स मिल जाएंगे और इस तरफ आपको शॉर्मा भी मिल जाएगा। बारबेक्यू रिब्स हैं, फ़िश है एंड शॉर्मा। और ये आपके भाई की प्लेट। सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, अब कुछ खाते हैं। ओके, सो हियर वी आर एट द मोटुल रेसिंग लैब। और ये ट्रक यहाँ पे क्यों मौजूद है और इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो अभी चलते हैं इस ट्रक के अंदर और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। Hello everyone, my name is Camilo Polimeni. I'm the motorsports manager for Motul at a global level, and this is the Motul Racing Lab. We are right now in Dakar. This is Dakar 2024. We are in Hale right after the rest day. And basically here in the Racing Lab, what we do is provide a service for all of the racing teams that they want to have their oil analyzed. What do we mean by having their oil analyzed? Is basically just bringing a small sample of used oil that we can analyze with a machine that we have here in the back to understand basically how the engine is working. To put it in plain and simple words, it's always good to do a comparison of the engine oil on an engine with the blood in the human. The blood basically flows everywhere. It oxygenizes the body and it cleans the body. The engine oil does exactly the same. The engine oil flows throughout all of the moving parts of the engine. And it's not only the basic work that everyone knows about oil, that it lubricates everything, but it also dissipates heat. It also cleans any unwanted material that's in there. So basically, by doing an oil analysis is the same thing that doing a blood test on a human. On a blood test, you can see all of the things that are not working good or are working weirdly in a body. With an engine oil sample, you can do exactly the same. With the samples that we get here, we get different parameters that allow us to understand how engines are performing, and we can prevent damages. So to give you guys an example, we can have a race team that comes to the racing lab with a sample, an engine that's overheating, and they don't really know why it is. So by analyzing the oil, we can check on if it's either wear in the internal materials, if it's some sort of problem with the chemistry. It could happen because very high temperatures that the oil gets burned, so it doesn't work properly. It could also be from contamination coming from outside of the engine. So in the environment that you are here in the Dakar, one of the things that we see the most, it's obviously sand. This is a very rocky, very sandy environment, so engine oil can easily get contaminated with sand. Sand, it's just like sandpaper, that you use to clean the walls before you paint. It's exactly the same one. Once it mixes with the oil, you're basically sanding inside of the engine, so you will have a high wear inside of the engine, which is what we don't want. The thing about doing this oil analysis, it allows the teams to know how the engine is performing. So it's not something that is going to solve a problem, it's basically to prevent a problem. By doing this, we can understand how the engine is performing and let know to all of the teams, not necessarily only Motul teams, because here we support basically everyone and anyone that wants to have their oil analyzed. We can support them and let them know this data is telling us that the values are not correct, and if you don't fix this or this, of course it depends on what the problem is, you will have an engine failure and most likely your Dakar will be ended. So basically the lab is composed of 4 machines plus 1 human. We have Celine over here, that's the most important part of the lab. Without the person that knows how to read all of this data, obviously we don't have any data. We have 1 machine which is a spectrometer. This is the first machine that allows us to see any unwanted materials that are inside of the engine oil. So basically you can find, let's call it aluminum, copper, or any sort of material that shouldn't be there, that could have come from wear of inside of the engine. Followed by that we have a viscosimeter. Viscosimeter is, as the name says, is to check that the viscosity of the engine oil is still within the right parameters. The main problem that we have with viscosity here during the Dakar is caused because of the fuel. The fuel quality here in Saudi is not the best, unfortunately, so you can get fuel dilution. Fuel dilution basically means that fuel gets mixed with the oil, and when this happens, the viscosity is dropped, and obviously with a lower viscosity, engines are prone to have problems. After that, we have a
fuel dilution machine. It's something that we use for our top teams. Here we have a bunch of teams that we support. So by doing this, using this fuel dilution machine, we can make sure that everything is working correctly. And the final machine that we have, it's basically to prove the water and all of the different contaminants that can come inside of the oil. So with just a simple droplet over here, we can make sure that the engine oil is working correctly, and then that there are no contaminants coming from outside of the engine. So guys, this is the original by Motul category. The origins of the original by Motul category go all the way back to 1978 when Thierry Sabine started the original Paris-Dakar rally. During this era, all of the riders were essentially originals. Over the years, the competition professionalized and more work teams got involved. However, to keep the spirit of the Dakar, they kept one class of the riders who choose not to have any outside support or assistance. It was called the Malais Moto category. Malais is the French word for a crate or a case, which you're able to see right now on your screen. So literally it means the motorbike riders who live out of a crate. When Motul teamed up with ASO as the main partner in the Dakar, the name of the Malais Moto category was changed to Original by Motul. The origins remain the true spirit of the Dakar and only have themselves and each other to find new and ingenious ways to keep on going through the grueling race. These values align perfectly with Motul's core values that all of you know about. Because this category is so specific, it has a very unique set of regulations. Essentially, the riders are only allowed to bring the maximum of one trunk, which will contain all of their essentials. Both Motul and ASO are responsible in supporting the Original by Motul competitors to the best of their abilities, but mostly they are on their own. तो यहाँ पे आपने जितना भी मैं जो अभी आपको बताया था, ये सारे जितनी चीज़ें हैं, this is all these guys have. इनके अलावा इनके पास कोई भी किसी चीज़ की भी assistance इनके पास नहीं होती, and they have to do it all on their own. That's why it's probably one of the toughest categories in Dakar Rally. And you will see over here that when this category starts, यहाँ पे तकरीबन 40 बाइकर्स होते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल सिर्फ पीछे आपके पास तकरीबन 20 बच गए हुए हैं, क्योंकि इतनी टफ है ये category that they have to do everything on their own. So that's why this has the true essence of Dakar itself, how it originally started, and Motul is proud to be one of the name partners of this category. So हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, और मैं ये व्लॉग कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी फेवरेट कैटेगरी के सामने, जो है ओरिजिनल बाय मोटूल. उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. स्टे ट्यून्ड. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय.